Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Knowledge check, page number 134. Fill in the blanks using the words given in the bracket. Breathing, carbon dioxide, water, external, alveoli, oxyhemoglobin. Number 1. The process of taking in oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air is dash respiration. Answer is external. Number 2. In the human respiratory system, the exchange of gases takes place in tiny sacs in the lungs called dash. Answer is alveoli. Number 3. The number of times a person breathes in a minute is called the dash rate. Answer is breathing. Number 4. In blood, oxygen is transported in the form of the compound dash. Answer is oxyhemoglobin. Number 5. When glucose is oxidized in the presence of oxygen, the end products are dash and dash. Answer is carbon dioxide and water. Exercises. Question A. Choose the correct options. 1. The exchange of gases in the human body takes place in the option A. bronchi, B. trachea, C. alveoli, D. bronchioles. Answer is C. alveoli. Number 2. Anaerobic respiration in human beings takes place during option A. reading, B. running, C. singing, D. sleeping. Answer is B. running. Number 3. Which component of exhaled air turns lime water milky? Option A. oxygen, B. nitrogen, C. water vapor, D. carbon dioxide. Answer is D. carbon dioxide. Number 4. Sparkles are absent in option A. fish, B. mosquitoes, C. butterflies, D. grasshoppers. Answer is A. fish. Number 5. Which of these is a product of anaerobic respiration? Option A. ethanol, B. glucose, C. oxygen, D. starch. Answer is A. ethanol. Question number B. Fill in the blanks using the words given in the bracket. Lactic, lenticels, hemoglobin, external, skin. Number 1. Dash respiration involves the exchange of gases. Answer is external. Number 2. In RBCs, the protein dash combines with oxygen and transports it to cells. Answer is hemoglobin. Number 3. The exchange of gases in earthworm takes place through its dash. Answer is skin. Number 4. Muscle cramps occur due to accumulation of dash acid in them. Answer is lactic. Number 5. Dash are the openings on the woody stems of the plants through which the exchange of gases takes place. Answer is lenticels. C. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements. Number 1. Some living organisms do not carry out respiration. Answer is false. All living organisms carry out respiration. Number 2. Breathing is a chemical process while cellular respiration is a physical process. Answer is false. Breathing is a physical process while cellular respiration is a chemical process. Number 3. The salamander uses both its lungs and its moist skin for respiration. Answer is true. Number 4. Energy released from food through anaerobic respiration is more than that released through aerobic respiration. Answer is false. Energy released from food through aerobic respiration is more than that released through anaerobic respiration. Number 5. Lungs are the main organs of respiration. Answer is true. Question number D. Name the following. Number 1. The flap-like structure at the junction of pharynx and the windpipe. Answer is epiglottis.
Number 2, the cells in the blood that are responsible for the transportation of oxygen. Answer is red blood cells. Number 3, the organ used for breathing by a grasshopper. Answer is spiracles. Number 4, the organ used for breathing by a whale. Answer is lungs. Number 5, an example of an anaerobic. Answer is yeast. Question number E. Answer this question in one word or a sentence. Question number 1. Why do the cells in our body need oxygen? Answer. Glucose is the main source of energy of our body. It is absorbed in the small intestine and transported by blood to various cells of the body. Inside the cells, glucose is broken down to release energy in the presence of oxygen. Hence, the cells need oxygen. Question number 2. What is the function of the mucus gland on the nasal cavity? Answer is the secretions of mucus gland moisten the inhaled air and prevent the drying of tissues in the nasal cavity. Question number 3. How is the water produced by cellular respiration used? Answer is water produced during cellular respiration is used for other metabolic activities. Question number 4. Name the organ used for breathing by a goldfish. Answer is gills. Number 5. Define breathing rate. Answer is the number of times a person breathes in a minute is called the breathing rate or a respiration rate. Question number F. Answer the following questions in brief. Question number 1. Why should we breathe air through the nose and not through the mouth? हमें एयर नोज से क्यों ब्रीथ करनी चाहिए और माउथ से नहीं? इसका कारण बतलाइए. Answer is the air that we take in by breathing passes through our nostrils and enters the nasal cavity. The air in the nostril traps the dust, harmful substances and microorganisms. The inner lining of the nasal cavity contains mucus glands. These secretions prevent the drying of tissues and moisten the inhaled air. All this is possible if we breathe through our mouth. जो हम एयर ब्रीथ करते हो अपने नॉस्ट्रल्स से होके नेज़ल कैविटी में जाती हैं. नॉस्ट्रल्स में हेयर प्रेजेंट होती हैं जो डस्ट को और हार्मफुल सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं. जो इनर लाइनिंग होती है नेज़ल कैविटी की उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और ये सिक्रीशन जो करते हैं उससे हमारे टिश्यूज़ की ड्राइंग नहीं होती है और जो इनहेल्ड एयर होती है उसको मॉइस्चर करते हैं. ये तभी पॉसिबल है जब हम नोज़ से ब्रीथ करें. अगर माउथ से ब्रीथ करेंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा. डस्ट भी ट्रैप नहीं होगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी ट्रैप नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 2. डू द वर्ड्स ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन मीन द सेम? एक्सप्लेन योर आंसर. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का सेम मीनिंग है, इसको समझाइए. आंसर इज रेस्पिरेशन इज डिफाइंड as the process by which oxygen is used to release energy from food. It consists of two processes. Breathing or external respiration involves the exchange of gases. Oxygen-rich air is taken into the body and carbon dioxide-rich air is given out. The exchange of gases is a continuous process that goes on throughout the lifetime of an organism. It involves specific organs, tissues and cells. Internal and cellular respiration involves the release of energy from the food by the breakdown of food inside the cells of the body. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए फूड को यूज़ करके, और इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं. इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन रिच एयर जो है बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है बॉडी से बाहर जाती है. ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे टिश्यूज़ एंड सेल्स.
इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है। इसमें फूड को ब्रेक डाउन करके रिलीज ऑफ एनर्जी होती है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन कीजिए, उसकी परिभाषा लिखिए। आंसर इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड using oxygen is called aerobic respiration. Glucose is oxidized by oxygen and broken down into carbon dioxide and water with the release of large amount of energy. Aerobic respiration एक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड ऑक्सीजन को यूज़ करके, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। ब्रीदिंग कैसे होती है ह्यूमंस में, ये एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, the movements of the diaphragm and ribcage during the processes of inhalation and exhalation help us breathe. The process by which oxygen-rich air is taken into the lungs is called inhalation. During inhalation, the muscles between the ribs of the ribcage contract and move it upward and outwards, making it to expand. The diaphragm contracts and moves downwards. This increases the volume of the chest cavity and the air from outside the body passes into the lungs. The lungs get filled with air and expand. The process by which carbon dioxide rich air is given out of the lungs is called exhalation. During exhalation, the muscles between the ribs of the rib cage relax and move it downward and inward back into its normal position. The diaphragm also relaxes and moves upwards. This reduces the volume of the chest cavity and forces air out of the lungs. Thus, air is sent out of the body. इनहेलेशन एक्सहेलेशन हेल्प करता है ब्रीथ करने में। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मूवमेंट्स होती है डायफ्राम और रिब केजेस की। जो ये प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में जाती है उसको इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं और आउटवर्ड्स की बाहर की साइड में आती हैं और इस तरह से वो रिब केज को एक्सपेंड करता है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड्स मूव करता है। इससे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और बाहर से एयर लंग्स में अंदर आ जाती है और जो लंग्स है वो बाहर की एयर से फिल होके एक्सपेंड करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर फेंकी जाती है, लंग्स से बाहर फेंका जाता है, उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन के दौरान जो मसल्स जो होती हैं रिब्स के बीच में वो डाउनवर्ड्स मूव होती हैं और इनवर्ड्स और बैकवर्ड्स मूव होती हैं, बाद में वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं। इसमें डायफ्राम रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है। ये रिड्यूस करता है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम और इस तरह से जो एयर है बॉडी के लंग्स के बाहर निकाली जाती है और बॉडी के बाहर भी निकल जाती है एक्सहेलेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में अंतर बताइए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। Internal respiration, first point, it is an intracellular process. External respiration, point 2, no energy is released. Internal respiration, point 2, energy is released and is used for metabolic activities. External respiration में जो एक्टिविटी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, वो सेल के
बाहर होता है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा गया है। इसमें कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर प्रोसेस कहा गया है। और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है।